So hello everyone. So आम भिडियो देखा जो आम विद्याधन ऑनलाइन टेस्ट अच्छी से केमती एपेयर करेंगे। तो प्राय सब पिला तो मोस्ट ऑफ द पिला से मोबाइल अटेंड करेंगे। तो मोबाइल किसी सेटिंग दरकार हम तुम टेस्ट एपियर पर। ओके जब सेटिंग्स ऑलरेडी आगुरी ठीक अच्छे तो किसी असुविधा नहीं। जो मानकर ना सेटिंग्स ठीक तो से सेटिंग्स गुड़ा एनेबल करेंगे फोन में से फास्ट देखने। ओके तो मोबाइल विद्याधन जो ऑनलाइन एग्जाम अच्छी अच्छे आम सेप्टेम्बर 1 11 ରୁ 12ଟା। ओके गोटे घंटार एग्जाम हम 40टा क्वेश्चन आसो सब MCQ। ओके क्वेश्चन बोथ ओडिया एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज आसो। नेगेटिव मार्किंग ना 40टा जो क्वेश्चन अटेंड करने चेष्टा कर। ओके तो चलो देख ना कि आमर जो मोबाइल टाक कौन कौन सेटिंग्स आम चेंज करा पड़ो। ओके ओके सो मोबाइल सेटिंग्स चेंज करने कौन करा पड़ो। तुम जो गूगल क्रोम अच्छी गूगल क्रोम ओपन कर। ओके गूगल क्रोम ओपन करी देख ऊपर राइट साइड कर्नर 3टा डॉट कि 3टा लाइन शो करूँ। ओके ताकू क्लिक कर क्लिक कलापर कौन आसो तुम सेटिंग्स ऑप्शन आसो बहुत गुड़ा ऑप्शन आसो से थी सेटिंग्स मुझे देखो दूसरी। ओके ऊपर देख 3टा डॉट शो करुँची पूरा ऊपर। ओके तो से पूरा ऊपर 3टा डॉट को क्लिक कर क्लिक कलापर ये ऑप्शन गुड़ाक आसो तले देख सेटिंग्स ऑप्शन अच्छी सेटिंग्स क्लिक कर सेटिंग्स क्लिक कलापर तुम सेटिंग्स ओपन हम सेटिंग्स ओपन होगापर तलू स्क्रॉल कर आसो साइड सेटिंग्स। ओके साइड सेटिंग्स क्लिक कलापर कौन ऑप्शन आसो साइड सेटिंग्स ये देख साइड सेटिंग्स ऑप्शन अच्छी एक्सेसिबिलिटी तले तो साइड सेटिंग्स क्लिक कर साइड सेटिंग्स क्लिक करके देख साइड सेटिंग्स जो ऑप्शन गुड़ाक अच्छी मुझे गोटे ही ऑप्शन दरकार सेटा कैमेरा। ओके कैमेरा ए आस्क फर्स्ट जो लिखाई कैमेरा क्लिक कर कैमेरा क्लिक करके देख यहाँ ब्लू टिक है कि। ओके जब ब्लू टिक है ठीक अच्छे और जब ब्लू टिक ऑन है ऑन कर एनेबल कर। ओके तो ये ही सेटिंग्स चेंज करा पड़ो मोबाइल जब तुम अटेंड कर ऑनलाइन टेस्ट मोबाइल। ओके नेक्स्ट हूँ आमर विद्याधन टेस्ट केमती दबा। ओके तो फास्ट देख तुम मेल को जो रजिस्टर्ड मेल जो मेल आईडी देकी तुम अप्लाई कर विद्याधन से ईमेल को ही मेल जीव तुम जो लिंक एग्जाम लिंक जीव। ओके जब तुम मेल आईडी तुम मोबाइल रे लॉगिन करन ताले तुम जीमेल रे ताकू जाइए ऐड कर। ओके ना गूगल क्रोम रे भी जाइए ऐड कर गूगल क्रोम रे कौट ऐड कर जो आम ये जो देखाला ये देख ये देख ये जो तुम गूगल क्रोम ओपन कलापर जो ऊपर 3टा डॉट थी क्लिक कलापर ये ऑप्शन गुड़ा जो आसो ये देख लिखाई भाभी ईमेल आईडी अच्छे ये ईमेल आईडी टाक तुम तुम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी माने ऐड कर रजिस्टर्ड कोटा जोटा देखिए अप्लाई कर ईमेल आईडी पासवर्ड। ओके विद्याधन अप्लाई कर से ईमेल आईडी ये कर क्रोम रे कर। ओके किंबा तुम जीमेल रे कर। ओके मोबाइल रे गोटे जीमेल गोटे ऐप थी देखो से जीमेल रे जाइए एड अकाउंट रे क्लिक करके तुम जीमेल लॉगिन कर वो जीमेल जोटा देखिए अप्लाई कर विद्याधन। ओके आज जब तुम जीमेल चेंज करार अच्छे अकाउंट तुम जो ईमेल आईडी देच से चेंज करार अच्छे ताल सपोज तुम को दुकान कि कौट देच तुम निज ईमेल आईडी देवाई चाहो ताल तुम मेल को जो ईमेल आईडी से मेल जीव से भी गोटे वीडियो थी केमती ईमेल आईडी चेंज करने। ओके किंबा जो विद्याधन तुम पाक जाइए मेल vidyadhan.odisha@stfaundationindia.com से मेल को रिक्वेस्ट पठेब कि ईमेल आईडी स्टूडेंट नेम ईमेल आईडी चेंज करने को चाहूँ। ओके तुमको वॉलंटियर माने कॉल करेंगे एग्जाम पाई। ओके सो समस्ते ना भी कहीपर कि मेल आईडी चेंज करार अच्छे जदि अति इमरजेंसी ताहले चेंज कर जदि दे पार एग्जाम दियो किसी असुविधा नहीं। ओके आउ मेन टेस्ट देवा पूर्व गोटे सैंपल टेस्ट देवाई तुमको पड़ो सैंपल टेस्ट कौन जोटा आम प्रैक्टिस टेस्ट कहूँ मॉक टेस्ट माने मेन टेस्ट देवा पूर्व तुम गोटे प्रैक्टिस तुम पाक गोटे सैंपल टेस्ट पठाब जो तुम ये टेस्ट अटेंड कर जब ठीक ठाक तुम अटेंड कर दौ ताल तुम किसी प्रोब्लेम नहीं तुम मेन टेस्ट आराम से दे पार। ओके आज जब किसी प्रोब्लेम थी ताल तुम मेन टेस्ट दे पार ना तो सही प्रोब्लेम टाक सॉल्व कर पार। तो सैंपल टेस्ट 23 ରୁ
23 ଅଗଷ୍ଟରୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ତୁମ ମେଲ୍କୁ ପଠାହେବ। ଓକେ, ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଓକେ, ଇଏ ଦେଖ ତୁମ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିକୁ ଏମିତି କୋଇଲିକରୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଯିବ। ଓକେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ପଲ୍ ବିଦ୍ୟାଧନ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2022। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତୁମର, ସେଇଟା ଯିଏ ବି ଦେଇପାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ଭାଇ ଯିଏ ବି ଦେଲେ ଚଳିବ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କେମିତି ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଦେବ, ତା ପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଯିଏ ବି ଦେଲେ ଚଳିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ୍। ଓକେ, ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ, 30 ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ତୁମ ପାଖକୁ କୁଇଲିଗରୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଯିବ, ମେଲ୍ ଯିବ ଆଉ ଥରେ, ଓଡ଼ିଶା ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେନ୍ ବିଦ୍ୟାଧନ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2024 ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମକୁ କାଲି 23ରେ ପଳେଇବ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ପଲ୍ ବିଦ୍ୟାଧନ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 30ରେ ଯିବ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶା ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ 2024। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖିଥିବ। ଓକେ, ତ କୁଇଲିଗରୁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଯିବ ସେ ମେଲ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଆସିଯିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତଳେ ଦେଖ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଇଥିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଯାକେ ରହିବ। ସୋ ଏଇଠି ଏପି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ପଲ୍ ବିଦ୍ୟାଧନ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା କାଲି ଯିବ। ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ମେନ୍ ବିଦ୍ୟାଧନ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2024, ଯେଉଁଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, ଟାଇମ୍ 11ଟାରୁ 12ଟା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ତୁମେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ 5 ମିନିଟ୍, ତ 11ଟାରୁ ଅଛି ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍, ତୁମେ 10ଟା 45ରେ ମେଲ୍କୁ ଖୋଲିକି ଓପନ୍ କରିକି ଏଇ ପେଜ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ ପୁରା। ଓକେ, ସେଇଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆସିକି ଥିବ। ସୋ ଯେମିତି 11ଟା ହେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଆସିବ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାକିଂ ଇଜ୍ ଏନାବଲ୍ଡ ଫର୍ ଦିସ୍ ଫର୍ମ। ତ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଚିଟିଂ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, କ୍ୟାମେରା 24 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତୁମର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଦେଖିବ। ଇଭେନ୍ ତୁମେ ଯଦି ମିନିମାଇଜ୍ କରିକି ଯାଇକି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ରେକର୍ଡ଼ ରହିବ, କେତେ ଥର ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛ। ଓକେ, ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରେକର୍ଡ଼ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। କ୍ୟାମେରାରେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେସ୍ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କାହାର ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଓକେ, ତ ଚିଟିଂ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରା। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମ ଫେସ୍ ଆସିଯିବ କ୍ୟାମେରାରେ, ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଓପନ୍ ଦ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ସେଟିଂସରେ ଯାଇକି ତୁମ କ୍ୟାମେରା ଏନାବଲ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଯଦି ନ କରିଥିବ ଏଇଟା ଏଠି ହେବନି, ଆଉ ଯଦି ହେବନି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବନି। ଓକେ, ତାପରେ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଓପନ୍ ଦ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଟାଇମ୍ ଲେଫ୍ଟ, କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା, କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ସବୁ ଶୋ କରିବ। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କରି ତୁମେ ତୁମ ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ତୁମକୁ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର କେଉଁଟା, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 6ଟା ଡିଜିଟ୍ ଆସିଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ 6ଟା ନମ୍ବର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଥିବ, 6ଟା ନମ୍ବର ଥିବ, ସେଇ 6ଟା ନମ୍ବର ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନ, ସେମାନେ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ତୁମର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟାଧନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଦେଖେଇଦେବ ଡାଉନଲୋଡ଼ ୟର୍ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍। ସେଇଠି କ'ଣ ଥିବ, ତୁମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ, ତୁମ ନେମ୍, ତୁମ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ତାରିଖର ଅଛି, କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିଦେବ। ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟା 6ଟା ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟର କରିକି ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ। ସବୁ ଦେଖିକି ସବୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ଥିବ। ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଦେଖ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ ସବମିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ।
ଟେଷ୍ଟରେ टाइम सरिबा पूर्व क्लिक करिवो। ओके तो एति ही थिला टेस्ट पाई आ तुमको गोटे मेल जीवो काली से सब डिटेल्स थी तुम है वीडियो गुड़ाक थी ये वीडियो भी थी केमती देखिपार तुम केमती टेस्ट दब केमती ईमेल आईडी चेंज कर। ओके डाउनलोड तुम हॉल टिकट केमती डाउनलोड कर सब थी तो समस्ते देखी नब।